The story begins that we had the crisis in 1991, and with the crisis of 1991 we made some reforms. What were these reforms that we started with? We made reforms, macroeconomic imbalances. So remember, when we talk about these macroeconomic imbalances of late 80s and early 90s, ये macroeconomic imbalances हैं, high fiscal deficit. ये सर्वे नहीं बताते, ये मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशली जो भी लोग आप अनइनिशिएटेड हो, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी अभी, उनको ये आइडिया लग जाएगा कि मैक्रोइकोनॉमिक इम्बैलेंसेस का मतलब हाई फिस्कल डेफिसिट दैट वी हैड इन इंडिया, हाई इन्फ्लेशन दैट वी हैड इन इंडिया, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट दैट वी हैड इन इंडिया, और उसके अलावा हाई फॉरेन डेट, स्पेशली शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स. ये थे मैक्रोइकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, the combined deficit, inflation, unsustainable current account deficit and high foreign debt. ये fiscal deficit जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का था, ये 12.6% ऑफ जीडीपी था, 8.4% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 4.2% ऑफ जीडीपी फॉर स्टेट गवर्नमेंट. ये हमारा फिस्कल डेफिसिट था उस 1990 में. ऐसे ही inflation, if we take consumer price index of industrial workers, it was recorded at 11% in 1990. तो ये हमारा इन्फ्लेशन का लेवल था. और वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट was greater than 4% of GDP. और इनके साथ आप ऐड कर दो हाई फॉरेन डेट, और उसके बाद हो गया गल्फ वॉर, और इस सब ने हमारी हालत पतली कर दी. तो हमें रिफॉर्म करने पड़े of 1991. So survey begins with those reforms. That our reform was, or our response was, LPG reforms. Our response was LPG reforms. What were these LPG reforms? We went for trade and investments liberalization. We removed licensing. We removed reservation for public sector enterprises. We went for import liberalization. We removed quantitative restrictions on imports. All these things we did, and that was trade liberalization. Investment liberalization we did. We simplified the Companies Act. We also went for higher investment possibilities. We allowed FDI in India, and all that we started doing. Then entry restrictions were simplified in India. Automatic approval policy for FDI was brought up to 51%. Later on, in certain sectors, it was taken to 100%. तो FDI liberalization किया गया. Exchange rate was made flexible and allowed to depreciate. In fact, India shifted from fixed exchange rate in 1991 to managed floating exchange rate 1994 March. Managed floating का मतलब exchange rate will be determined by the market, but RBI will be allowed to intervene in case of any speculative attack. Exchange rate market decide करेगा, लेकिन अगर RBI को लगा कि कोई speculative attack हो सकता है, तो RBI intervene करेगी उसके अंदर. So exchange rate will be determined by the market, but RBI was allowed to intervene in case they suspected any speculative attack. कि कोई जानबूझ के अगर मेरी करेंसी को नीचे वैल्यू पे ले जा रहा है या ऊपर वैल्यू पे ले जा रहा है, तो आरबीआई को इंटरवीन करना अलाउड होगा. जब आप ये पढ़ते हो रूपी फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, इट मींस whatever money you bring into India on current account will be converted into rupee on market exchange rate basis. जो पैसा आप भारत में लाओगे करंट अकाउंट पे, वो डॉलर से रूपी में या येन से रूपी में या यूरो से रूपी में कन्वर्ट होगा ऑन market exchange rate basis. For example, if you bring money by exporting goods,
if you bring money by exporting services, if you bring money by remittances, जैसे तुम बाहर गए, बाहर से मेरे लिए $2 लाख का गिफ्ट भेजा, तो वो मैं रूपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ इंडिया में अब on full current account convertibility basis. That was allowed. Earlier it was not allowed, it was fixed exchange rate. So remittances, exports of goods, exports of services, factor income from abroad. These are all inflows on current account. Inflows on current account, all convertible at market exchange rate. So full current account convertibility. और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्शियल इसलिए क्योंकि हमने restrictions बना कर रखे. Restriction like you are not allowed to transfer beyond a limit outside India. Foreign investors were not allowed to bring money beyond a limit into India. FDI up to a limit was allowed in certain sectors. For example, even today in insurance, we don't allow more than 74%. Or in e-commerce with inventory model, we don't allow more than 49%. So you see restrictions on FDI, restrictions on FII, ये capital account के components हैं BOP में. तो उन पे restriction था. तो ये किया गया. लेकिन इंडिया पहले बिल्कुल क्लोज था, ट्रेड कम करता था, इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करता था. ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी हमने शुरू की, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी शुरू की और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनानी शुरू की. वी वेंट फॉर लिबरलाइजेशन, वी वेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड वी वेंट फॉर ग्लोबलाइजेशन. देन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स. अब ये थे रिफॉर्म्स डन between 1999 and 2004. अब ये आप समझिए इकोनॉमिक सर्वे अभी हमारी करंट सरकार एनडीए की है, इस समय भी एनडीए की सरकार थी, तो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि देखो उस समय भी हमने ये रिफॉर्म्स किए, अभी ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ये सही भी है. Most of the structural reforms in India have happened. If I leave the 92 to 96, 97 Narasimha Rao ji's government, 91 to 96, then most of the structural reforms have happened when NDA government has been in power. You know, so and you know what happens is that they do the structural reforms, and then the next party comes to power, and the structural reforms show their impact then, and growth happens, and people say, oh look, growth happened with this party. So it's a travesty at times. But yes, of course. But with the UPA governments, what we saw was they did not do structural reforms, but they work more on human resource development. For example, they introduced Manrega, or for example, they introduced Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. So, you know, it's kind of a balance in Indian politics, that one side will go a lot towards social sector development, another side will go more towards structural development. So fair enough, that is how it has been. So what I say here is, तो हम क्या रिफॉर्म्स लेकर आए. एक था इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स वर फर्दर लिबरलाइज्ड बाय लेट 90s. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. फेमा इन 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1999. सो मोर लिबरलाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट, एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं इसी पे. डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1998 फॉर्मलाइज कर रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट को सरकार पहली बार. उसके पहले फॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था. सो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1998, यू नो, सो डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑल्सो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. अ मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज क्रिएटेड in 1998. So there were changes across. New telecom policy was brought in 1999, which allowed for CDMA mobile technology, जिससे Reliance और Tata घुस पाए थे मार्केट में, you know, and that revolutionized the market. Lot of experiments then happened, and after that Indian market, telecom market never looked back. Till 1999, the even on mobile phones, the incoming call charges used to be 8 rupees per minute, and outgoing call charges used to be 16 rupees per minute. The new telecom policy allowed for revenue sharing, allowed for license fee to be reduced, allowed firms to do more free business, and suddenly the telecom charges started coming down, new business started developing, and that is all what that survey is reminding us of. Of course, this was the phase. अगर मुझसे आप पूछो तो 1998 to 2003 वो फेज था जिसमें हमने सबसे ज्यादा प्राइवेटाइज किया. 24 पब्लिक सेक्टर कंपनियां प्राइवेटाइज हुई थी 1998 से 2004 के बीच में.
ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी जैसे हमारे करंट सरकार के बारे में कहा जाता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, बट एक्चुअली वो हो नहीं रहा। दो कंपनीज प्राइवेटाइज हुई हैं, एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात। There is no other company which has been privatized. Even economic survey in this chapter itself, and I'll gradually teach you that, doesn't talk about privatization. They talk more about monetization. So the government priorities may be changing, but that was a government which was actually going for reforms. They were privatizing companies like Hindustan Zinc, companies like Bharat Aluminium, Balco tha ye, companies like VSNL. So they were privatized in those days. Maruti Udyog actually was given to to Suzuki. It was a 50-50 venture. Then this was the time when government sold 17% further to Maruti. So that was another thing that came across. And then of course FRBM Act 2003 that comes across to discipline the government. FRBM Act 2003 के साथ एक और बात समझना आप, Ways and Means Advances in 1997. तो पूरा बैंकिंग इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन 1997, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बिकमिंग द डोमिनेंट थीम एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 1997. तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हो रहे थे, फिस्कल सेक्टर में रिफॉर्म हो रहे थे, टैक्स रेट्स को रैशनलाइज किया जा रहा था। ये इंडिया का फर्स्ट फेज था रिफॉर्म का 1991 से लेकर 2003 तक। ऑलराइट, दिस वाज इंडियाज फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। देन द सर्वे सेज दैट the problem was that offshocks overshadowed the reform between 98 to 2002. सवाल यही उठा था उस वक्त भी कि भाई रिफॉर्म जब इतने हुए तो ग्रोथ क्यों नहीं हुआ उतना, ग्रोथ क्यों कमजोर रहा। और ये था 1998 to 2002 growth was relatively timid. So growth was timid because India's nuclear test led to sanctions. So FDI decreased. In fact, for 1.5 years FDI was almost frozen in India. Two successive droughts happened in 2000 and 2002. And end of technology boom. This was actually what is called the dot-com bust. Share market declined due to fall in valuation of tech companies. इसमें एक बात सर्वे मेंशन नहीं करते क्योंकि वो पहले हो गया था, लेकिन उसका इंपैक्ट हमें मिला। आप कहीं साइड में हो सके तो लिख के रखना जरूर। ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997, उसका इंपैक्ट 2-3 साल तक चलता रहा। फॉर 2-3 इयर्स बैंकिंग हिला हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स हिले हुए थे, एफडीआई, और साथ में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए थे। तो डबल वैमी के थ्रू हम थे। सो बिटवीन 98 and 2002 दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। एंड देन द सर्वे सेज दैट द इंडियाज पार्टिसिपेशन हैपेंड इन ग्लोबल बूम। यहां से हमें ग्रोथ मिलना शुरू हुआ। ग्लोबल एवरेज था 4.8%, इंडिया ग्रू एट 8% पर एनम। यहां मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सर्वे नहीं बताता पर तुम ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, दैट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ग्रू एट 20% पर एनम। तो ये जो पीरियड का ग्रोथ था वो इंडिया के स्ट्रक्चर में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा था उसका बड़ा तगड़ा ग्रोथ था। दिस ग्रोथ वाज हेवीली बेस्ड ऑन दैट। साथ में इंडिया ने 98 से 2002 तक जबरदस्त मेहनत की थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रोड फंड फॉर हाईवेज, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फॉर टेलीकॉम, Central Electricity Regulatory Commission, setting up state electricity regulatory commissions, fixing up DISCOM issues for electrification. पहली बार हमने अनबंडल किया था। पहले जनरेशन कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इकट्ठा होती थी। 1998 में हमने ये शुरुआत की एंड बाय 2001 वी अनबंडल्ड दीज कंपनीज विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट 2003। तो इसके थ्रू हमने किया कि जेनकॉम का काम अलग होगा, अब जनरेशन कंपनी अपना काम करेगी, ट्रांसमिशन अपना और डिस्ट्रीब्यूशन अपना। तब हमें पता चलना शुरू हुआ कि कैसे हम एक अच्छा छड़ी लेते, पट से मारते और कहते आ बिजली इधर और मैं बिल नहीं दूंगा। ये हरकत पता चलनी शुरू हुई 2003 के बाद। ज्यादा हमें पता था चोरी होती है, बट द एक्सटेंट वी डिड नॉट नो, एंड दैट एक्सटेंट वी गॉट टू नो ओनली व्हेन वी अनबंडल्ड
the Gencom, Transcom and Discoms to understand how distribution companies are running into losses because the electricity that they supply, people don't pay for that. So these were major reforms that were done in those time periods, and that was the result we started getting in this period when the world became more confident about us, and when the world regenerated the growth momentum. It meant FEMA was giving us good result, FDI inflow was tremendous, capital inflows. We had domestic factors which were conducive. For example, better rainfall, increased investor sentiment, and this was crowding in because of the expenditures that were done and reforms which were done in the past. And higher consumption growth because people were getting more confident about level of economic growth. So higher consumption growth, ये सारी चीजें कर रहे थे हमें या हमें लेके जा रहे थे towards development, domestic factors developing fast. But exports, I repeat, were playing a big role. Foreign investment inflow was playing a big role, and India did very well from 2003 to 2008.